Okay. So Uh, I will try my best to give you a joint or a complete comprehensive version of rheumatoid ताकि hand की deformity में आदमी परेशान ना हो. That is the principle, isn't it? Okay. So it is all going to be teaching. It is going to be lecture plus teaching like we did in the morning. Okay. So if somebody wants to play, this is next year. This is a hand of a 45-year-old gentleman who came to see us. And what do you see in this hand? I don't mind anybody. कोई हर एक बारी बारी करो ना तो सबको बोलने की वो आ जाएगी practice. yes, sir. Should I start? Of course. Okay, sir. First of all, this is a right hand of a male patient. I can appreciate flexion and ulnar deviation deformity at the metacarpophalangeal joints of the ulnar four digits. So, but that's not what I wanted you to see. That will come to later. I wanted to see something totally classic of a rheumatoid patient. This is a Z deformity of hand. Yeah, that's okay. What's this? These are dorsal pads or knuckles on the dorsum of the PIP joints. So what are they? What's a rheumatoid nodule? Rheumatoid nodules. Yes, you must. If you have a rheumatoid hand and you see something like that, it's a rheumatoid nodule. You cannot miss this, yeah? So what's a rheumatoid nodule? These are the soft tissue deposits seen over multiple joints, especially PIP and MCPJs, seen in RA patients. Yeah, and how does a rheumatoid nodule form? They are formed due to a persistent inflammation over the joints. Okay, but don't know the what happens exact pathology. What is the main pathology in rheumatoid patients? What is happening? So it's a soft tissue immunocompromised disorder, isn't it? Your tissue it forgets to recognize self. So all the tissue that is your own personal one, your antibodies fight it. That is because you had either viral infection or some sort of disorder that has changed the immune receptors on your own tissue. So then they come in. It's a soft tissue disorder, and mostly what it does is it destroys soft tissue and makes what is called a pannus. You know what a pannus is? It is a soft tissue swelling, sir, or the joints. Yeah, the pannus is basically a destructive soft tissue which presents itself either in a bony deformity or a soft tissue deformity. In the shape of this ulnar deviation of the hand, this is because the soft tissue has been eaten up, and the pannus that forms, it becomes destroyed completely and ends up in an ulnar deformity. However, it can also locally form what we call as a rheumatoid nodule. Okay, this is an example of a similar nodule, but in a different place, which is more common. The elbow is the most common site for having a rheumatoid nodule. So what happens when you incise these? If somebody comes in and says कि भाई it doesn't look right, मैं जब elbow अपने table पे रखता हूँ किताब में लिखने के लिए तो it's painful. So what advice are you going to offer to him? I'll advise them for the activity modifications. जिस काम से वो हो रही है irritation हो रही है, they should avoid that work, sir. He says भाई मैंने ऑपरेशन कराना है. Okay. Then we can plan operative excision of that swelling. Okay, so what are your basic guidelines that tell you if you're going to operate around the elbow in a rheumatoid nodule? What is the problem with operating around the elbow? So it is a point of contact. So your scar should be away from your point of contact, and you should make sure that you take the nodule totally, completely, and close the gap by doing a soft tissue reconstruction. Isn't it? What is Koebner's phenomenon? Sorry sir, I haven't heard. Okay, so जो रूमेटॉइड होते हैं या जिनको जो है गाउटी टोफाई होते हैं या जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है with an inflammatory disorder, वो जहाँ पे आप उसको स्कार करते हैं ना, वो स्कार की हीलिंग ठीक नहीं होती है. You must make sure that you stay away from the rheumatoid tissue, especially on points around the elbow. That is very important to understand. कि इसको अगर थ्रू आप स्कार करें ना तो उसका साइनस बन जाएगा और वो ऑल द टाइम उसको
healing नहीं होगी, so you stay away from it and away from the sharp points, especially in nodules around the elbow. Okay, so Right. just a revision that it is a symmetrical polyarthritis. It's a soft tissue disorder. They all have morning stiffness. They all have elevated ESR. And the body does not recognize its own self. So the immunoglobulins target its own tissues. Okay. ESR elevation का क्या मतलब है? ESR elevation means some chronic inflammatory process is running. Very good. So ESR would tell you what was happening in the last few weeks. If you want to know what's happening now, what test would you do? Yeah. What test would you do? Then I would like to have CRP levels. Very good. So that's what it is. If you are looking for an acute phenomena, it's CRP. If you're looking for a long-term phenomena, it's ESR. So rheumatoid is a long-term phenomena. Therefore, you look for an ESR. It is always raised in these patients. They have soft tissue problem. They have symmetrical polyarthritis. Most of the time, the whole hand will have the same problem. Okay, and we know the pathogenesis of this and what happens to these patients. Okay, so basically, you have a situation where they have fever and morning stiffness, but no other signs. Then they end up with synovitis. The synovitis, which is the pannus, causes destruction, and the destruction causes deformity. So the deformity is the result of what? Why do you get deformity in rheumatoid patients? Deformity starts due to synovitis and followed by weight bearing in the lower limb joints and subluxation of the tendons in the upper limb I joints. know it will happen. Why do you get deformity? जो चीज डिस्ट्रॉय हो गया है ना, उसका ऑपोजिट जो मसल है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे जिसको कहते हैं सिनर्जेस्टिक मसल. जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लेक्सर्स होते हैं उसके साथ एक्सटेंसर्स होते हैं. तो अगर आपके फ्लेक्सर्स डिस्ट्रॉय हो गए ना, तो एक्सटेंसर्स प्रीडोमिनेट करते हैं. सो द एक्सटेंसर विल देन बी unopposed. Therefore, the deformity is from what is left behind rather than what has been destroyed. Okay, we'll understand this when we come to Beechners and whatever. But the key here is okay, whatever is destroyed does not cause deformity, but whatever is left will cause the deformity. जो डिस्ट्रक्शन जो होगा ना, वो सॉफ्ट टिश्यू खत्म हो जाएगा, तो वो तो फिर डिफॉर्मिटी कुछ भी नहीं करेगा. उसके जो अनअपोज्ड एक्शन होगा, जो उसके वो डिफॉर्मिटी फिर कॉज करता है उसके बाद. ठीक है, that's a key point in rheumatoid to remember that the deformity is due to what is left behind rather than what has been destroyed. Occasionally they have dropped fingers and all that when tendon is gone. तो उसमें भी यही होता है कि जो टेंडन जो है वो चला गया, तो जो उसका एक्सटेंसर्स चले जाते हैं, तो वो फिंगर जो है वो फ्लेक्शन पोजीशन में चली जाती है. ये बताएं कि कैसे मालूम करता है कि जो डिफॉर्मिटी आपकी है वो टेंडन की वजह से है या नर्व की वजह से है? हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? Hand में sir we do tenodesis effect. Very good. So it is called passive tenodesis. When we sir extend the wrist, the fingers go on flexion, and when we flex the wrist, the fingers go on extension. This is normal tenodesis effect. Fantastic. So जो मसल आपका जो है ना, अगर इंटैक्ट है और नर्व प्रॉब्लम है, तो वो आप जो passive tenodesis, when you do that, there will be passive tenodesis. But if the tendon is gone, then when you do passive tenodesis, it will not work. That will tell you that this is a tendon problem or a nerve problem. That's how you differentiate. Okay. So yeah. Next thing is, how do you test hand function? Do you know of a way of testing hand function? Yes, sir. I will give you a slide too, so you can have a look. So what functions does the hand do? The functions that a hand do, one is writing, means to holding a pen. Other is to grasp something. So there is a precise grip, and there is a what do you call them, a spherical grip or a cylindrical grip. Okay, but the precise grip is where you need a pen or you need a knife to cut. Right, the screwdriver is power grip when you hold everything together in hand. And there is a pinch grip, which is like picking up coins from the table or in your pocket, you know. And then you have power grip where you open your bottles and jars and stuff like that. And then finally you have what is called the claw lift or a hook lift, where you can lift with your fingers in a certain position.
So when you're assessing a hand function, you have to assess all these, because rheumatoid patients have got a major problem. They don't have the power grip, they don't have the pinch grip, and they don't have the precise grip. Okay, so you need to document that and say which part of the grip is missing. It is very important when you're examining these patients that what is left and what you can do to help him. Okay. Okay. So basically, if we're talking about hands, we'll have fingers, thumbs, wrist, and then tendons. Okay, so there are deformities in the finger, there's deformities in the thumb, there's deformity of the wrist, and there's deformity of the tendon. Before we go there, do you have a plan? If somebody comes with complete rheumatoid arthritis problems in hand, wrist, elbow, hips, knees, feet, shoulders, a whole lot, कोई आपके पास आइडिया है कि पहला कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है? Yes, sir. So first of all, we'll address the hand joints, ताकि जो है स्टिक वगैरह वो पकड़ सके. जॉइंट को स्टिक पकड़ने के लिए जरूरी तो नहीं होता है कि जॉइंट को आप सर्जरी करें. आपने वो देखी है स्पेशल स्टिक्स जो बनती है? Let me have a look, see if I can show you. Just give me a second. See if I have it in my computer. Let me see. Okay, just give me a second, okay? Okay. I'll show it to you after I finish, because if I go away, it might not come back again. Okay, so जो hand होता है ना, उसको पकड़ने के लिए जो लाठी होती है ना, उसमें ऐसा उसने पोजीशन बनाई होती है कि आप रूमेटॉइड हैंड से भी वो पकड़ सकते हैं उसको. Have you seen one of those? देखा है आपने? Yes, sir, we have seen. So you don't have to have surgery of the hand first. Okay, so there is a principle, it's called Suta's principle. Okay, Suta's principle is lower limb before upper limb. Okay, and distal before proximal. Okay, so when you have a patient who has complete rheumatoid and you have to do surgery, you have to do minimum possible with maximum function. सबसे पहले इन लोगों को आपने मोबाइल करना है. मोबाइल करने के लिए ट्राइपॉड गेट डालते हैं उसमें. तो फीट में फ्यूजन्स करते हैं मीडियल रे, लैटरल रे एंड पोस्टीरियर रे. अगर वो आप कलेक्ट कर देना तो बंदा चलना फिरना शुरू हो जाता है. That's the first thing you do. The second thing is, of the joints, you will do the knee joint, because if you do the hip joint first and then do the knee joint, what's the problem? अगर नी पहले कर दिया, हिप पहले कर दिया नी से, तो क्या प्रॉब्लम होती है? Sorry, sir, I am having some internet problem. Okay. Shahbaz, can you take over from here? I am some problem in the net. Shahbaz गायब है. So if you are doing a hip replacement before knee replacement, yeah, but what is the problem? The problem is, if you're doing a knee replacement and you've already done the hip will dislocate, because you need to flex the knee to a position to put a knee replacement into it. So therefore, you need to do the knee first before you do the hip. Always do, okay? These are all Suta's principles. So you do lower limb before upper limb, you do distal before you do proximal. So when you have a plan, you do feet first, then knee, then hip, then you come down to do elbow and shoulder, and then hand in the last, because you want to have a walking stick while you are negotiating them to have rheumatoid surgery, okay? Just remember that, you know, these are principles. If you work on this, if somebody asks you which operation will you do first, and that's the answer to that, okay? Okay, sir. So what is intrinsic plus deformity? These are due to contraction of the intrinsic muscle. Very good. So you have two muscles that works on the hand. There is a extrinsic muscle and there is an intrinsic muscle, isn't it? So the intrinsics are mostly the intrasci and the lumbricals, isn't it? So if there is a rheumatoid problem, then it will be an intrinsic problem. If it is a long, extensive problem, then it will be an extrinsic problem. What test do you do to differentiate between an intrinsic or an extrinsic? We call this an intrinsic minus hand or intrinsic plus hand. What test do you do? Sorry? Bunnell test. Very good. What is Bunnell's test? Bunnell test.
we will flex the MCP. It will increase the flexion of the interphalangeal joints. So what would that tell you? How do you know it's intrinsic, or how do you know it's extrinsic? It differentiates between the extrinsic and intrinsic. So how do you know? I mean, yes, you're correct, but you need to tell me what would you see when you do the test. Basically, in rheumatoid, the MCP joint is subluxed and ulnarly deviated. Okay, so if you flex the joint, the deformity will actually get worse, and therefore you will not be able to have a free hand. You cannot flex the DIP joint. If it's an extrinsic problem, by flexing the hand, the extrinsic muscle will make it tighter. However, if you hyperextend it, then the extrinsic the long extensors go out of it because they're shortened now, and you'll be able to flip the finger. That means it's a long extensor problem. Okay, do you understand that? No, yes, no. No, sir. Please. So what's a Bunnell test? You need to understand this very clearly. So you are trying to differentiate if it's an extensor problem or it's an intrinsic problem, such as the interossei and lumbricals, isn't it? Is that correct? Okay, sir. Okay, so when you flex it, if you look at it in this picture, the finger is flexed, which means the interossei are shortened. Then you'll be able to move, and this will be completely freely moving the PIP joint, because now the lumbricals are relaxed. So this is an intrinsic minus hand. But if it is not able to do that, then it's an intrinsic plus hand. Okay. However, Yes, if you extend the finger, that will relax the long extensors. By relaxing the long extensors, this will be able to be free. But if you do the same to a rheumatoid hand, the distal PIP would not be free, because now you're extending and stretching your intrinsics and lumbricals. So you need to understand what's a Bunnell test and what's an intrinsic minus an intrinsic plus test. And the reason you have deformity in rheumatoid finger is because the MCP joint has subluxed. That's the key problem to it. And they get intrinsic muscle tightness and contractures. Okay, so the next thing that you see is what is called a swan neck deformity. This is where we'll understand the deformity is purely because we are seeing the overuse of something that is still present against the something that is missing. So what is a swan neck deformity then? Can somebody describe? Yes, sir. It is DIP joints flexion होती है और PIP protection. See, all of you know this, but you can't express yourself. Please talk to each other and keep on repeating expressions. Okay, so a swan neck deformity is basically because we have an MCP joint subluxation. So because the MCP joint has subluxed, yeah, so if the joint subluxed, so that tendon is going to be tight and this one is going to be lax. So if that tendon is going to tight, what is going to do? It will hyperextend the PIP joint, yeah? Because वो ये नीचे गिर गया है तो वो उसको टाइट हो जाएगा तो ये हाइपर एक्सटेंड जब ये हाइपर एक्सटेंड होगा flexors are present, they will flex the distal part of your joint. Do you understand what I'm saying? You need to understand this concept. So if you fall off at the MCP joint, that will cause hyperextension because ये वाला tendon जो है वो present है तो वो उसको खींचेगा तो finger hyperextend हो जाएगी. लेकिन जो भी ये hyperextend हो गई तो flexor उसको tight होगा तो उसके बाद वो DIP को pull कर जाएगा तो you have a swan neck deformity. So the reason you have a pathology is because of what is left rather than what is missing. Understand? No, understand? Can somebody repeat what I've just said? So I know you've understood. No, ऊपर से गुजर गया है. नहीं sir, we get it. So repeat करो ना, नजमुल साहब, आप नजमुल हुसैन साहब है ना इसे. आप repeat करें ना, वो उसमें ये देखें मेरे हाथ को मैं दिखा रहा हूँ. ये यहाँ से ना MCP joint सब luxate हो जाता है, ठीक है? Soft tissue की problem की वजह से. तो जब ये सब luxate होगा ना, तो extensor tendon तो मौजूद है ना, वो तो अभी destroy नहीं हुआ. तो extensor tendon को जब आप लंबा करेंगे तो वो क्या करेगा? वो tight हो जाएगा. तो उसकी tightness की वजह से hyper extension हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे hyper extension हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना जो DIP joint है ना, उसमें फिर ये छोटा पड़ जाएगा flexor, तो वो इसको नीचे खींच लेगा. तो यहाँ पे hyper extension की वजह से यहाँ flexion है, इसको swan neck deformity कहते हैं, ठीक है? इसी तरह swan neck deformity के various reason होते हैं. एक classification आती है swan neck deformity की, किसी को याद है नाम उसका? No sir. Nelly Buff का नाम किसी को याद है? Nelly Buff.
Okay. So basically जो है ना, सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम होती है. सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं. कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से स्टिफनेस होती है. स्टिफनेस के बाद आर्थराइटिस शुरू हो जाती है. उसके अंदर आर्थराइटिस उसकी एंड स्टेज है. ठीक है. तो बेसिकली जब स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है ना, वो पहले जो है सब चीज पैसिवली करेक्टेबल होती है. फिर उसके बाद उसकी इंट्रिंसिक टाइटनेस आती है. फिर उसके बाद जो है जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाता है. फिर उसके बाद जो है आर्थराइटिस आ जाती है उसके अंदर. अगर कोई क्लासिफिकेशन याद नहीं है ना इम्तिहान में, तो आप उसको कहें कि 3 स्टेजेस होती हैं, द गुड, द बैड, द अगली. ठीक है. जो गुड वाली है उसको आप पैसिवली करेक्ट कर सकते हैं. बैड वाली जो है उसमें सॉफ्ट टिश्यू करेक्शन करना पड़ेगा. और अगली जो होगी उसके अंदर आर्थराइटिस हो जाएगा. उसमें जॉइंट को या फ्यूज करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा. इजी. ओके. अब बुटिनर डिफॉर्मिटी में क्या होता है? सर सर मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बदर. सर बुटिनियर में सर सेंट्रल स्लिप का बेसिकली रप्चर होगा और इसमें पीआईपी पे फ्लेक्शन होगी और डीआईपी पे एक्सटेंशन होगी. जो सेंट्रल स्लिप का रप्चर होगा ना, जो बाकी 2 बैंड्स होते हैं लैटरली, वो जो है ना एक्सटेंसर के बजाय फ्लेक्सर हो जाते हैं बिकॉज दे फोल्ड डाउन. आधे गो वोलर. यस. सो दे फोल्ड डाउन. सो वो एक्सटेंसर के बजाय फ्लेक्सर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के बजाय अब वो यहाँ आ गए हैं. तो जब यहाँ आ जाते हैं तो वो इसको पीआईपी जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं. तो जब पीआईपी जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं ना, तो जो डीआईपी जॉइंट है उसके पास और कोई चारा नहीं होता है सिवाय इसको हाइपर एक्सटेंड होने के लिए. क्योंकि उसको जो पाथ, जो रोड जो बनाया है, वो उसके पास जाने के लिए जो टेंडन था उसको छोटा करने के लिए उसको वो हाइपर एक्सटेंड हो जाता है. ये नीचे आने के बाद फ्लेक्शन हो जाएगा. देखे ना इसको, अगर ये फ्लेक्शन हो गई और ये टेंडन अभी भी इंटैक्ट है तो वो इसको फिर ऊपर यू करके खींच देगा. डू अंडरस्टैंड? ठीक है सर. हाँ. यस सर. ये 2 डिफॉर्मिटीज आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए. रूमेटॉइड की पेशेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि स्वान नेक क्यों होती है, ब्यूटेनायर क्यों होती है. यस. उसकी रीजन ये होती है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसके सॉफ्ट टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन या नीचे गिर जाती है या साइड को गिर जाती है. जब उसके नीचे गिरने से जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, जो टेंडन्स इंटैक्ट होते हैं ना, उसकी वजह से डिफॉर्मिटी होती है. ठीक है. तो स्वान नेक में जो होता है उसमें एमसीपी जॉइंट जो है सबलक्सेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें ये होता है कि जो डीआईपी जॉइंट होता है उसका फ्लेक्शन इसलिए फ्लेक्शन होता है कि ये वाला हाइपर एक्सटेंड हो जाता है. इसी तरह बुटिनर में जो टेंडन स्लिप होता है वो साइड में जब चला जाता है ना सेंट्रल स्लिप की वजह से, तो वो एक्सटेंसर से फ्लेक्स हो जाता है. जब वो पीआईपी जॉइंट को फ्लेक्स करता है तो डीआईपी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है. ठीक है. दीज आर ऑल करेक्टेबल डिफॉर्मिटीज. These are still correctable deformities. जब वो स्टिफ हो जाए और मूवमेंट नहीं हो उसके बाद और आर्थराइटिस हो जाए, फिर वो अनकरेक्टेबल डिफॉर्मिटीज होती है. इन दी अर्ली स्टेजेस व्हेन यू कैन पैसिवली करेक्ट देम, इनकी मैनेजमेंट होती है. इनको स्प्लिंट डालना. They all get splints. But if you can't passively correct them, then you have lost the opportunity. Now you have to do stability operations, which is fusions. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब सर्जरी पे आ जाए ना, तो if you can passively correct them, you have to do soft tissue procedures or splintage. If you cannot passively correct them, then to give stability and function to the hand, you have to do fusions. Do you know अगर हाथ का फ्यूजन करना होता है तो एमसीपी जॉइंट को किस पोजीशन में रखना होता है और पीआईपी जॉइंट को किस पोजीशन पे रखना होता है? Does anybody know? बदर साहब आप बताएं. सर इसकी जो फंक्शनल पोजीशन ऑफ हैंड, आई थिंक 50 to 70 डिग्री फ्लेक्शन ओवर द एमसीपी. Okay, so if I can show you, मेरे हाथ में प्याली है. This is the position of function. You have to have this. जी सर. Little जो नीचे वाला है ना वो ज्यादा है, बीच वाला कम है, उससे कम है और इससे कम है. इस पोजीशन पे आपके हैंड को होना चाहिए, which is position of function, which is called grasping a cup or grasping a glass. उसके बाद आप अपने डिग्रीज उसमें डाल दें. तो नीचे वाला सबसे ज्यादा होता है, ऊपर वाला सबसे कम होता है. You need to know this कि फंक्शनल हैंड होना चाहिए आपके पास. इससे आपका पावर ग्रिप भी आएगा, इससे आपका हुक ग्रिप भी आएगा और इससे आपका जो बिग मैसिव ग्रिप होता है जिसमें चीजें आपने बॉल या इस तरह की पकड़नी होती है. ऑब्वियसली यू विल लूज योर प्रिसाइज ग्रिप, बट रूमेटॉइड वाले तो ऑलरेडी लॉस हो चुके थे इनका प्रिसाइज ग्रिप. ओके जी सर. सर एक और क्वेश्चन है इस पे, जी, इफ आई कैन आस्क. ऑफ कोर्स. सर ये बुटिनियर एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटीज, व्हिच वन इज मोर इन अ पेशेंट with rheumatoid arthritis? They're both present. And is it So if you look at a rheumatoid hand, if you look at this hand, he's got all the deformities. He's got a butonaire here,
he's got a swan neck here and he's got another butynaire here. इसमें सारी deformities होती हैं rheumatoid hand में. Depend करता है कि कौन सा जो है ना soft tissue जो है वो इसमें involved है. They are both present and in same amount of patient with same amount of deformities. दोनों present होती है rheumatoid hand में. Classical feature होती है rheumatoid hand के केस में सारी deformities होती हैं. उसमें फिर thumb की जो है adductor deformity होती है जिसको Z deformity कहते हैं. उसके बाद ulnar deviation होती है wrist की, क्योंकि वो नीचे गिर के साइड में इंटरशाई इसको खींचता है. तो the whole hand has got everything. However, if it is passively corrected, इनको sprint से आप ठीक कर सकते हैं. जब वो अपनी स्टेज पे चला जाए, वो नेलीबफ की जो फोर्थ स्टेज पे चला जाए, तो उसके बाद फिर आप उसको फ्यूजन करते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शन में. ओके ओके सर. ओके. Okay. So basically, this is telling you about all the deformities in different joints, but we don't go through this. We understand that the problem is passively correctable, not passively correctable, or completely joint fused. So good, the bad, the ugly. This is the classification you must remember in the exam. So what is this finger showing? This is a mallet finger. Yeah. Why? So what has happened? I know the answers are all there, but you need to tell me so that I know you can talk. Due to hyperflexion of the distal interphalangeal joint. Your tendon is gone. Here, this is a patient who has got a ruptured tendon. Okay, so Yes. In a rheumatoid patient, you will either see a classic deformity of swan neck or butynaire deformity. अगर उसके swan neck or butynaire नहीं है, isolated DIP joint का problem है. So that means that a tendon is gone. Okay, so what test will you do to confirm that this is a tendon problem? Sir, we will do extension at the DIP joint. No, you will do what is we just remembered, passive tenodesis. Remember passive tenodesis? No, sir. So अभी तो डिस्कस किया था ना पैसिव tenodesis. अगर हाथ को आप एक्सटेंड करेंगे ना तो फिंगर्स फ्लेक्स होती हैं. अगर हाथ को आप फ्लेक्स करते हैं तो फिंगर्स एक्सटेंड होती हैं. Can you see that? This is called passive tenodesis. So अगर इधर का रप्चर है ना, तो अगर आप इसको फ्लेक्स करते हैं तो इसको एक्सटेंड होना चाहिए. अगर वो एक्सटेंड नहीं होता, इसका मतलब है कि एक्सटेंसर स्लिप जो है ना उसका टेयर है, टेंडन यहाँ पे नहीं चला. पैसिव टीनोडिसिस. You understand? Passive tenodesis. Okay, sir. तो किस Got और it. कंडीशन में पैसिव टीनोडिसिस नहीं होती है? एक तो नर्व की प्रॉब्लम हो गई, एक टेंडन की रप्चर की प्रॉब्लम हो गई. एक बहुत क्लासिक प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जिसके बाद जो है ना पैसिव टीनोडिसिस खत्म हो जाती है. सर ये क्या नाम है, फ्लेक्सर टेनिसिनोवाइटिस. VIC. So where do you see passive tenodesis absent in a orthopedic condition, which is very common in trauma? सर फ्लेक्सर टेनिसिनोवाइटिस. It's called VIC. no compartment syndrome. जब आपको compartment syndrome होता है ना, स्पेशली आपने Yes, उसको sir. मिस किया हो, तो जब वो पेशेंट आता है 6 महीने बाद, तो उसको या तो उसको Deploying फुल फ्लेज वर्कमैन स्कीमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन जिसको नहीं होता है ना, तो उसकी पैसिव टेनिडिसिस खत्म हो जाती है, क्योंकि सारे उसके इंट्रिंसिक्स टाइट होते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं पैसिव टेनिडिसिस करने के लिए. So one of the Yes. signs to test missed compartment syndrome is to do a passive tenodesis. या foot में करें या hand में करें, it will tell you that you missed a compartment syndrome in the past. ओके सर. Okay. फिंगर में अल्नर ड्रिफ्ट क्यों होती है? Maybe due to loss of the radial side of extensor. नहीं, उसमें अंतराशय कहाँ कैसे अटैच होते हैं? Oh yes, sir. Ulnar. जब आपके सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी किस्म का सॉफ्ट टिश्यू का प्रॉब्लम हो जॉइंट का, तो जो इंटरशाई होते हैं ना, वो वी टॉक इंट्रिंसिक प्लस हैंड्स, तो इंटरशाई टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिंगर्स जो है ना अल्नरली डिविएट होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द अनअपोज एक्शन ऑफ इंटरशाई. रिमेंबर दिस, रूमेटॉइड में जितनी भी डिफॉर्मिटीज होती है ना, वो जो चीज पीछे रह जाती है ना, वो करती है, रादर देन जो चीज गायब होती है. So if somebody is having ulnar deviation, that means the intrinsics are too tight and the soft tissue is causing the person to have ulnar drift. Okay? इसी तरह wrist में क्यों होती है? Wrist में क्यों होती है ulnar drift? सर जी, रूमेटॉइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको फिर दोबारा करेंगे कुछ अर्से बाद, ताकि इसकी रिवीजन हो जाए. लेकिन आज अच्छा हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग डिस्कशन हो गई.
जब रिस्ट में सॉफ्ट टिश्यू चला जाता है ना तो रिस्ट नीचे वोलरली सबलक्सेट कर जाती है। तो जब रिस्ट वोलरली सबलक्सेट कर जाती है तो स्ट्रॉन्गर टेंडन्स जो हैं वो फ्लेक्सर्स होते हैं कि वो एक्सटेंसर्स होते हैं? फ्लेक्सर्स। एग्जैक्टली, फ्लेक्सर्स के अटैचमेंट की पुल की वजह से ना अल्नर डिविएशन होती है और वोलर सबलक्सेशन होती है रूमेटॉइड की सॉफ्ट टिश्यू की डिस्ट्रक्शन की वजह से। ओके सर। ये बताएं कि थंब की डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी पता है आपको? एक तो मैंने आपको दिखा दी, ब्यूटेनाइड डिफॉर्मिटी जिस तरह फिंगर में होती है इस तरह थंब में होती है। उसमें भी सेम मसला होता है कि जो सेंट्रल स्लिप उसका जो टेंडन होता है ना वो फ्लेक्सर बन जाता है। जब इसको फ्लेक्स करता है तो बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन वो इसको एक्सटेंड करता है। सेम पैथोलॉजी है, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दिस टू हैपन एक्सेप्ट दैट इज इन द थंब रादर देन इन द फिंगर। ओके, इसी तरह स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी भी थंब में होती है, सेम मैकेनिज्म होता है बिकॉज वो एक तरफ से जो है टेंडन खींचता है तो दूसरी कंपनसेशन में वो उसको फ्लेक्स कर देता है डीआईपी जॉइंट पे और आईपी जॉइंट पे। So if you look at this hand, what is the first thing that comes to your mind? इस एक्सरे को देखने के बाद अगर आपकी क्लिनिक में ये मरीज आया तो आपको क्या समझ आ रही है? Because passively you cannot change, the arthritis already develop होने शुरू हो गई है यहाँ पे। Can you see that? Yeah. So इन पेशेंट को आप स्प्लिंट से सही नहीं कर सकते। इन पेशेंट को ठीक करने के लिए आपको आर्थोडिसिस करनी पड़ेगी in the position of function, so that they can have a grasp, they can hold their hands, they can pick things and feed themselves. Okay, so this is not rheumatoid, but you can see this in rheumatoid. What is a gamekeeper's thumb? Gamekeeper, this is due to lateral ligament damage. I can't hear you, sir. Sir, there are two collateral ligaments around the thumb, that is the radial collateral and the ulnar collateral, and gamekeeper's thumb is due to the rupture of the ulnar collateral ligament. Very good. So what is called a Steiner's lesion then? जो अल्नर कोलेटरल का अगर रप्चर होता है ना तो वो अगर जो है ना कैप्सूल से बाहर आ जाए ना तो वो स्टाइनस लीजन कहलाता है, बिकॉज इट कैन नॉट हील बिकॉज टेंडन्स हील व्हेन दे आर अप्रोक्सीमेटेड इन देयर लाइन ऑफ फंक्शन। तो अगर ये इसका जो कोलेटरल लिगामेंट बाहर आ जाए ना कैप्सूल से, इसको स्टाइनस लीजन कहते हैं। व्हाई इज इट कॉल्ड गेमकीपर थंब? Sir, I think maybe because in game keeping the thumb is widely away from the finger to hold. What is gamekeeping? What gamekeeping are we talking? Gamekeeping, if just like लॉर्ड्स होते थे ना इंग्लैंड में, उनकी अपनी जमीनें होती थी, उन्होंने एक बंदे को रखा था तो उसका काम ये होता था कि उस जमीन पे जितने भी जानवर होते थे ना वो उनका लुक आफ्टर करता था। तो उसमें एक होता था गेम कीपर, उसका काम ये होता था कि जो गूस और जो तीतर और इस तरह के जानवर होते थे ना उनको रखता था। तो अगर उधर से किचन से ऑर्डर आता है कि आज हमें एक तीतर चाहिए, तो तीतर को पकड़ के उसकी गर्दन थंब पे, हम तो हलाल कुर्बानी करते हैं ना, वो उसको थंब पे उसकी गर्दन रख के उसको तोड़ता था थंब के ऊपर। तो उससे उनकी अल्नर कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी होती थी, इसलिए इसको गेम कीपर्स थंब कहते हैं। इंटरेस्टिंग। अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मैं पढ़ने के लिए जो है ना मैं इतना उल्टी सीधी फजूल चीजें पढ़ता हूँ जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता है मेडिसिन। बट अगर मैं रात को 2 घंटे नहीं पढ़ता ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। हमारे लिए अच्छा था। Okay, so what is this called? This is called arthritis mutilans. इसमें रूमेटॉइड में इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई सॉफ्ट टिश्यूज की कि वो सारा का सारा हैंड जो है ना वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। इसको कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलांस। और you will not see this in Pakistan, but you will see quite a lot of these. We see quite a lot of these patients. They are at the end stage, and all we can offer them is multiple joint fusions. I will show you next day one of my patients, जिसमें मैंने MCP और PIP joint के पूरी fusions किए, including thumb. और उसके बाद उसका हाथ ऐसे हो गया है कि वो he can now lift things and grab things. इससे पहले वो नहीं कर सकता था. But this is called arthritis mutilans, which is a end stage rheumatoid. Yes. So we discussed rheumatoid in the wrist deformity. The reason for that is because of volar subluxation. ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो जो muscles होते हैं वो उसको pull करता है उस direction में. So this is a classic rheumatoid hand that you will see. There is a adductor deformity. There is a swan neck. In a butynaire in the thumb. There is ulnar drift. There is volar subluxation.
there is a tendon that is gone and therefore you have distal fingers. So exam में अगर आपको तस्वीर दिखाई जाए ना तो सबसे पहले आपने इसका जवाब देना है this is a bilateral symmetrical deformities, which means that it is a inflammatory disorder. Most likely this is a rheumatoid hand. उसके बाद फिर आप उसको बताएं कि I can see a adductor deformity of the thumb. I can see a butyric deformity of the thumb. I can see ulnar deviation of drift, and there's probably 2 or 3 tendons that are not working, and they have got DIP joint problems. क्योंकि अगर ये ulnar finger deviate करती है ना, तो फिर इसको वो या सोनेक या butyric में जाना होता है. अगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है ये टेंडन जो है रप्चर हो गया है. How do you repair? How do you treat tendons ruptures? एक्सटेंसिव टेंडन का रप्चर हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं उसके साथ? जी खामोशी अच्छी नहीं होती है. सर रूमेटॉइड के पेशेंट में अगर आपके पास एक्सटेंसिव टेंडन, देयर आर two names you must remember. One is Von Jackson syndrome. वो क्या होता है? सर नहीं सुना कभी. एब्डक्टर जीडीटी मिनिमी जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट से जा रहा होता है उसकी इंजरी होती है, रप्चर. जो रूमेटॉइड होता है ना उसमें पहले लिटिल फिंगर जाती है, फिर रिंग, फिर मिडिल, फिर इंडेक्स, फिर थंब जाता है. ठीक है. अगर लॉन्ग एक्सटेंसिव थंब का जाता है ना तो उसका अलग नाम होता है. वो जो है ट्यूबरकल से जो है रब करता है, लिस्टर ट्यूबरकल से, और उसके बाद वो रप्चर जाता है. लेकिन अगर लिटिल फिंगर का है तो उसको क्लासिकली वॉन जैक्सन सिंड्रोम कहते हैं. ये वाली लिटिल फिंगर जो होती है ना ये नहीं काम करती है, उसका बंदा वो इस तरह करके आता है, लेक्सल का इसको ड्यूटरॉन्स हुई है. ठीक है. तो अगर मल्टीपल लोगों के टेंडन रप्चर है तो क्या करेंगे? अभी इस बंदे को जो है ना दो उसके उसको पहले इफ यू कैन सी दिस, उसको साइनोवाइटिस शुरू हुआ, साइनोवाइटिस के बाद उसके टेंडन चले गए, टेंडन चले जाने के बाद इसको ड्रॉप फिंगर्स, दोनों साइड के उसके फिंगर्स ड्रॉप हो गए. इसका मतलब है उसके एक्सटेंसिव टेंडन्स इन दोनों फिंगर्स के चले गए. अब क्या करना है इसके साथ? आर्थोडेसिस. So if you have more than one tendon gone, you cannot reconstruct. You can do them by taking grafts from somewhere else, but the best option for these people is to have an arthrodesis. So then again, जो रूमेटॉइड की मेन ट्रीटमेंट होती है वो या स्प्लिंटेज होती है या जो है ना आर्थोडेसिस करते हैं. स्प्लिंटेज में उनको फंक्शन आता है और आर्थोडेसिस में उनकी जो है ना पावर ग्रिप तो नहीं आती है, लेकिन इतना आता है कि वो चीजें उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं और वो कॉस्मेटिकली सही लगते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट दैट यू मस्ट रिमेंबर, दैट कि 3 स्टेजेस होती है रूमेटॉइड में. एक में स्प्लिंटेज होती है, दूसरे में सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन होती है, तीसरे में आर्थोडेसिस होती है. कुछ लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन रूमेटॉइड्स के बारे में ये मशहूर है कि आप उनको जो है ना ऑपरेशन करके स्किन लगा के खोल के बंद करें तब भी वो आपके एहसानमंद होते हैं कि वो इतनी उनको पेन होती है कि कुछ भी करो वो दे फील हैप्पी. So the only indication for joint replacement in fingers and MCP joint and PIP joint is in rheumatoids. All they do is give them a bit more stability than they have. But to do a joint replacement, what is must? What is must in a hand? जो Swanson डालते हैं ना आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं. What is the prerequisite of doing hand joint replacement? एक तो ये कि सॉफ्ट टिश्यू फंक्शन होना चाहिए, दूसरा जॉइंट नॉर्मल होना चाहिए, एज नियर नॉर्मल एज यू कैन गेट इट टू. उसकी शेप ताकि वो जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, क्यों तो उसमें अपना मसल टेंडन तो कोई नहीं होता है, वो प्लास्टिक का इंसर्ट होता है. तो इट इज डन वेरी अर्ली स्टेज. But most often than not, most people of these states have got no soft tissue function, so therefore joint replacement in them becomes a nightmare, and therefore arthrodesis is the mainstay of treatment. Yeah, I think we've annoyed you quite a lot today. Yeah, बहुत ज़्यादा annoy कर दिया आप सबको और सब परेशान बैठे हुए, लेकिन दोबारा आएंगे हम इसको. We will come back to rheumatoid. Okay, अब आपको मैं इसकी वीडियो भेजूंगा, आप इसको देखें और पढ़ें. I don't want you to say nothing in the exam अगर आपको रूमेटॉइड हैंड दिखाया जाएगा. एक पाकिस्तान में I'm not sure कि रूमेटॉइड है कि नहीं है, लेकिन हर एग्जामिनर के पास तस्वीरें होती हैं और वो तस्वीरें आपको रूमेटॉइड हैंड की दिखाएगा. रूमेटॉइड हैंड ऐसी चीज है कि आपको गारंटी है कि वो इम्तिहान में आएगी. तो आपको जो है उसमें मतलब कुछ ना कुछ बोलना चाहिए. इसलिए मैं पिछले 3 हफ्ते से यही कह रहा हूँ आप सबको, जब मैं नहीं होता ना अपने बच्चों को पकड़े, अपनी बेगम को पकड़े, अपने वालिद साहब को पकड़े, माँ को बिठाएं, उसको क्या मैं आपको रूमेटॉइड हैंड सुना रहा हूँ, भले उसको समझ नहीं आए, लेकिन आपने बोलना है. दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू. अगर बोलोगे नहीं ना तो इम्तिहान में पास नहीं होता आदमी, इसलिए कि नॉलेज से कोई नहीं फेल होता, अपने आप को एक्सप्रेस ना करने से आदमी फेल होता है. और बहुत सिंपल सी बात है, उसके पास एक कागज होता है जिसमें उसने स्कोर करने होता है. इफ यू डोंट से इट दैट मींस यू डोंट नो, यू डोंट स्कोर.
आपको भले पता हो लेकिन आपने नहीं बताया ना, तो वो ही विल नॉट स्कोर यू ऑन दैट. So you have to do this to me. मुझसे ये ना, ये आपने प्रॉमिस करना है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं अपना टाइम निकालता हूँ सिर्फ इसी चक्कर में कि I want you to guys to do well. लेकिन उसके बदले में आपने मुझे ये प्रॉमिस करना है कि रोजाना कम से कम आधा घंटा जो है ना, आपने कोई एक टॉपिक लेके किसी दूसरे को सुनाना है. ओके, इंशाल्लाह. कोई भी नहीं सर मिला ना तो बीवी बच्चों को सुनाए, माँ बाप को सुनाए, उनको बिठाए, उनको कहे मैं सुनाने चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको बोलने का अंदाज आ जाएगा, तरीका आ जाएगा. क्योंकि इम्तिहान वाले दिन में आदमी इतना स्ट्रेस होता है कि वो अपनी तरफ से कहानी नहीं बना सकता, उसने जो सीखी भी होती है ना वही कहानी रिपीट कर सकता है. तो बहुत जरूरी है इम्तिहान के लिए कि आप सब लोग जो है ना किसी को पकड़ के सुनाए जो कुछ भी आपने देखा है. If you don't do this, you find it very difficult on the day of exam to reproduce it. इसको बार बार रिपीट करना है. वो जो क्रिकेट खेलते हैं ना उसमें मेमोरी पैटर्निंग कहते हैं, समझ आती है मेमोरी पैटर्निंग क्या होती है? तो जो बंदा जो होता है ना, जिसने फ्रंट फुट पे ड्राइव करना होता है ना, तो उसने वो फ्रंट फुट का ड्राइव इतनी दफा प्रैक्टिस करना है कि उसके मेमोरी पैटर्न में चला जाता है कि उसका एल्बो किस तरह फ्लेक्स होगा, उसका कैसे एक्सटेंड होगा, उसकी हिप किस पोजीशन में होगी, उसकी नी किस पोजीशन में होगी. मेरा छोटा लड़का है, उसकी 16 ईयर्स उम्र है, वो उसको इंग्लैंड के स्क्वाड में उन्होंने डेवलपमेंट स्क्वाड में रखा हुआ है. तो वो पूरा साल प्रैक्टिस करता है, उसको 5000 दफा एक स्ट्रोक कराते हैं, तो तब उसको वो नेचर में आया. इसको कहते हैं मसल मेमोरी या मसल पैटर्निंग. आपके दिमाग के पास भी ना वो पैटर्निंग और मेमोरी आनी चाहिए कि अगर आप कोई कहते हैं रूमेटॉइड हैंड, जैसे उसने सॉन नेक दिखाया, आपने फौरन उलट देना है, जो आपने सीखा है फौरन उसी वक्त दे दें. इम्तिहान बेचारे को एग्जामिनर को चांस ही नहीं दें कि वो उसकी क्या करें. आप लोग यू हैव टू बी सो परफेक्ट. सॉन नेक में जो हम वोलर प्लेट एडवांसमेंट करते हैं और फोलर टेनोटमी करते हैं, ये इसके बारे में बताएं. और वो जो बुटिनियर में डिस्टल फॉलर और फिर स्प्रिंग लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन, these are surgical procedures that are done when you have a soft tissue problem. Okay, only there is no arthritis of joint, they are all totally normal. Very unusual to have a rheumatoid patient with that kind of deformities. मुझे जो है 17 साल हो गए हैं, मैं अपलम की प्रैक्टिस करता हूँ. मेरे पास आज तक इस मुल्क में ऐसा कोई मरीज नहीं आया जिसमें ये फैंसी ऑपरेशंस किए जाएं. ठीक है, तो बेसिकली जो है उसमें सॉफ्ट टिश्यू जो फोर्सेस होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए उसको ऑपोजिट सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उसका. तो अगर आपके पास इस तरह का ये हो गया है, फ्लेक्शन हो गया है, तो उस फ्लेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों टेंडन जो है ना बीच में इसको रिपेयर कर देते हैं. तो जो आपके फ्लेक्सर्स हो गए थे एक्सटेंसिव, वो बिकम एक्सटेंसिव अगेन. अब उसका क्या नाम है, आई हैव फॉरगॉटन ऑल दैट. द सेम इज फॉर द सोन नेक डिफॉर्मिटी. उसको क्या हाइपर एक्सटेंशन को करेक्ट करने के लिए उसकी सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर करते हैं. दीज आर समथिंग दैट you should not be asked in the exam because they don't happen many. ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है. मैं बता रहा हूँ 17 years में मेरे पास ऐसा कोई रूमेटॉइड का मरीज नहीं आया है जिसको सर्जरी के सॉफ्ट टिश्यू की जरूरत हो. Most of them have gone beyond it. But for completion's sake, मैं दूंगा, मेरे पास कोई slides पड़ी हुई हैं, but I'll show it to you the next time we do, and then we'll have a chat on it. But basically आपको ये सारी चीजें पहले पता चलेंगी तो फिर ऑपरेशन पूछेगा ना. You need to tell them what these are before you can talk about the operation. But I will have a look. I have a slide somewhere and I'll bring it next time. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Anything else? So कल शाम को 7 बजे जो है ना, जीशान साहब आपको बोन ट्यूमर्स पढ़ाएंगे. उन्होंने मुझे कहा कि वो 45 मिनट्स लेंगे आपका. ठीक है, 45 मिनट्स में आपको एक्सरे कैसे पढ़ना है, बोन ट्यूमर का इम्तिहान में क्या कहना है. उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन ट्यूमर्स जो हैं उनकी बेसिक वो आपको बताएंगे. फिर जॉइंट सेल ट्यूमर पे उन्होंने बात करनी है. और मेरे ख्याल से फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है थोड़े बहुत जिसको आपको इम्तिहान में आना चाहिए, वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. वो कह रहे हैं उनके पास 4 लेक्चर्स हैं, वो 45 मिनट्स में आपके साथ उस पर डिस्कशन करेंगे कल 7 बजे पाकिस्तान टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें क्योंकि मैंने उनको कहा है कि मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं. तो अगर आप लोग टर्न अप ना होंगे तो मुझे कहेगा यार ये तुम्हारे स्टूडेंट आया नहीं जिसको इम्तिहान देना है. मेक श्योर कि आप लोग खुद भी आए और अपने दूसरों को भी कहें कि जो इम्तिहान दे रहे हैं उसको ज्वाइन करें. क्योंकि फायदा है, नुकसान कोई नहीं है उसमें. नुकसान तो सिर्फ ये है कि टाइम ज़ाया होता है, लेकिन फायदा ये है कि इम्तिहान एक ही दफ़ा देना है. इम्तिहान सिर्फ एक ही दफ़ा देना है. जितनी दफ़ा इम्तिहान देंगे एक तो आदमी कॉन्फिडेंस खत्म होती है, और दूसरा जो है बड़ा एक्सपेंसिव काम होता है ये. ठीक है, तो कल जो है ना वो आपको सिखाएंगे बोन ट्यूमर्स. और संडे को जीशान कह रहा हूँ, सुफियान और काजिम जो है ना आपको सॉफ्ट टिश्यू नीज के बारे में इसी सेम टाइम पे 7 बजे संडे को वो आपको कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत समझाने की. ठीक है सर. इंस्ट्रूमेंट्स पे एक लेक्चर जरूर रखिएगा. तो मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स की कोई तस्वीर नहीं है. आप में से किसी के पास अगर इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर है ना तो उसकी एक पावर पॉइंट स्लाइड बना दें, उसके बाद उसको आप वो शेयर करें तो फिर देन वी कैन टॉक ऑन इट. दैट ओके? ओके ओके सर.
सर MRI नी का MRI जो है उस पे होगी कोई जूम मीटिंग? कल जो है ना वो कल संडे को जब हम सॉफ्ट टिश्यू की बात करेंगे तो एमआरआई को भी देखेंगे उसके अंदर। मैंने एक ओके सर, एमआरआई की थैंक यू। स्लाइड्स दी थी सीखने के लिए, 8-10 स्लाइड्स के अंदर थी, मैंने फोरम पे डाली हुई थी, उसको दोबारा देख लें। लेकिन ये कि वो सुफियान और जो काजिम साहब है ना वो इसको जरूर डिस्कस करेंगे अपने नी में किस तरह डिसाइड करना है कि मल्टी लिगामेंट इंजरी है कि नहीं है, एसीएल गया है कि नहीं गया है, क्या करना है उसके साथ। सर एक पेल्विस का सीटी स्कैन भी होता है, उसका भी एक्सट्रैक्शन होता है इसमें तो मैं शोल्डर सर्जन हूं, मुझसे आप जो है ना बहुत सारे ऐसे काम करवाने हैं जो मैं नहीं करता, तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जो है ना ये सारी चीजें ना देखता हूँ ना करता हूँ। सर एक क्वेश्चन बोले, पूछे। सर एक तो जैक्सन आपने 1 इंजेक्शन बताया था, एक मिनरफेल्ट सिंड्रोम टाइप का था, वो भी 1 इंजेक्शन से होता था, तो उसकी जरा कंफ्यूजन हो रही है। उसका भी सिंपल प्रॉब्लम है, बेसिकली यू हैव गॉट सॉफ्ट टिश्यू टेंडन जिसकी करेक्शन नहीं होती है, जिसको ड्रॉप फिंगर कहते हैं ना, उसी हिसाब से उसका नाम बनाया हुआ है। मैनरफेल्ट टाइप क्या पोजीशन, बट बेसिकली उसकी पैथोलॉजी यही होती है कि उसमें टेंडन का फंक्शन खत्म हो जाता है और यू हैव अ ड्रॉप फिंगर। सो इफ यू सी दिस यू कैन कॉल देम ड्रॉप फिंगर। जिंदगी में कभी भी एग्जाम में जो है ना सिंड्रोम का नाम नहीं लेना है, क्योंकि फिर आदमी फंस जाता है। Most of the time confusing होता है। You just describe the deformity and that's the best thing you have to do. अच्छा सर, वो फिंगर इधर ड्यूरेशन होती है, Can't hear you. Can't hear you. बड़ा एको आ रहा है आपके साउंड के साथ। ओके सॉरी म्यूजिक I can't hear you. मेरे ख्याल से आप उसको टाइप कर लें अगर, क्योंकि मेरे तो आवाज में बहुत ज्यादा एको आ रहा है आपका। उसमें व्हाट्सएप फॉरम पे टाइप कर दें। उस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के बता दो। Axial rotation in TA finger. What is TA finger? Rheumatoid arthritic finger. Okay. So again, the rotation is purely because जो आपका जो soft tissue है ना, उसमें एक तरफ से जो है वो काम कर रहा है, दूसरी तरफ से काम नहीं कर रहा है। तो जो इंट्राशाई होते हैं और लम्ब्राइकल्स होते हैं वो उसकी जब पुल करते हैं, लेकिन आपका जो जॉइंट है वो उसके कोलैटरल्स ठीक होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ब्यूजनर और सोनिक डिफॉर्मिटी यू गेट अ रोटेशनल डिफॉर्मिटी। ये बात समझ आई? जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, अगर आपके कोलैटरल्स इंटैक्ट हैं जॉइंट के और आपको जो है इंट्रिंसिक टाइटनेस हो गई है, तो वो इंस्टेड ऑफ सबलक्सेशन वो उसको रोटेट कर देता है, क्योंकि आपके कोलैटरल्स जो होते हैं ना जॉइंट्स के, वो उसको अलाउ नहीं करते हैं सबलक्सेट और डिफरेंट डिफॉर्मिटी में जाने के लिए। दैट्स द रीजन फॉर रोटेशनल इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, इन सॉफ्ट टिश्यू रूमेटॉइड। एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन ऑफ कोर्स। Okay, question को what happened? मैं आपको वो 1 मिनट 2 मिनट मुझे दे, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल होती है रूमेटॉइड हैंड के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार। यार इनसे पूछ सकते हैं पीजी हॉस्टल जाएंगे? नहीं, क्या पूछना होता है? देखो इसने पूछा हुआ है जूम पे पूछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया सर ने, इस पे व्हाट्सएप पे मैंने क्वेश्चन भेजा सर को है कि उसका हो जाए जवाब। Can't find it now, but I will do it next time. मैं उसको अलग साइड में रख के आपको दिखाऊंगा। रूमेटॉइड में जो है ना कैंची काटने की अलग बनाई हुई होती है, खाना खाने का स्पून अलग होता है, फोक अलग होता है, उनका जो वॉकिंग स्टिक होता है वो अलग होता है। तो बेसिकली जो है ना रूमेटॉइड में
मोस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमारी जो है, मेरी जो है, वो या तो ऑर्थोडिसिस की है या उनको मैं देता हूँ डिफरेंट इम्प्लांट्स ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके. I don't do nothing at all for them. Sir, please say your WhatsApp. What time for surgery for inflammatory markers and skin condition? What's the time? You mean when you can do them? Yeah. Yeah. So you can only do them when you have a deformity that you have to reverse, or you have arthritis. Rheumatoid will always be having inflammatory markers high, and the skin condition will always be a problem. Okay, so you need to know whether the patient is on a disease modifying drug or not. Most of my patients, when I see them, वो rheumatoid risk होता है, उनको स्प्रिंट लगा के गुजारा करता है और उनको जो है मेडिसिन पे लगता है. जब उनकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है, उनका पेन कम होने लगता है, तो जब उनकी रेजिडुअल डिफॉर्मिटी होती है ना, उसकी मैं करेक्शन करता हूँ. तो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी की करेक्शन में मेक श्योर दैट दे ऑल हैव no inflammatory markers high enough, और उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ होता है, वो उनको या तो उनको स्प्रिंट्स लगा देता है या उनको डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट सच एज जो मीथोट्रेक्सेट या इस तरह की दवाइयाँ होती है ना, वो उनको दे देता है. मेरे ख्याल से वो 6 महीने तक उनको दवाइयाँ देता है. फिर उसके बाद जब रेजिडुअल डिफॉर्मिटी रह जाती है, फिर then they send it to me. But you should not repair them in an acute inflammatory response because they will not heal. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Welcome. You're all welcome. Thank you, sir.